फोटोशूट करा लिया ना, पर क्या आपने प्री वेडिंग ब्लड टेस्ट कराए? These tests are very important for the couple and they should be done by all. There are 5 important tests. Number 1, blood group and RH factor. अगर वाइफ RH नेगेटिव है और हस्बैंड RH पॉजिटिव है, then there are chances that the baby you conceive might be RH positive. Now this baby can have a lot of complications while in the uterus as well as after delivery. थैलेसीमिया स्क्रीनिंग. थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन कम बनता है, सो पेशेंट्स अनीमिक रहते हैं. नाउ इफ यू गेट वन फॉल्टी जीन फ्रॉम वन पेरेंट बट अ नॉर्मल जीन फ्रॉम द अदर पेरेंट, देन यू आर अ थैलेसीमिया कैरियर. थैलेसीमिया कैरियर को ऐसे कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, सो यू विल नेवर कम टू नो वेदर यू आर अ कैरियर ऑफ थैलेसीमिया. पर अगर आप दोनों कपल्स ही थैलेसीमिया कैरियर हैं तो देयर आर 25% चांसेस कि उनका बेबी थैलेसीमिया मेजर हो, क्योंकि उसको दोनों पेरेंट से ही फॉल्टी जीन्स मिले हैं. अब ऐसा बेबी बिकॉज वो हीमोग्लोबिन बना ही नहीं पाता है, सो they have a lot of problems and they would need multiple blood transfusions throughout their life. Third, screen for sickle cell disease. Now sickle cell disease is another inherited blood disorder. इसमें जो हमारा red blood cell है नॉर्मली वो राउंड शेप का होता है, इसमें वो सी शेप का हो जाता है, सो इट इज़ नॉट एबल टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इन इंडिया इट इज़ मोस्ट प्रेवलेंट इन महाराष्ट्र, Chhattisgarh, Odisha and Punjab. Now if you get one faulty gene from your parent, you would be a carrier of sickle cell disease and you would not have many symptoms. But if both the partners are carriers, then there is a 25% chance of the baby having sickle cell disease. तो ऐसे में क्या होता है, बिकॉज बेबीज के रेड ब्लड सेल्स आर सी शेप्ड, सो उसको हमेशा और वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं, तो बेबीज रिमेन अनीमिक, दे डू नॉट ग्रो टू वेल, उनको मल्टीपल इन्फेक्शंस होती रहती हैं, दे हैव सिवियर एपिसोड्स ऑफ पेन. सो for thalassemia, for diagnosing thalassemia as well as sickle cell disease, we can do either a complete blood count जिसमें we come to know the shape, number and size of our RBCs, and another very good test is HPLC या hemoglobin electrophoresis, जिसमें we come to know what types of hemoglobin are there in our blood. तो थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज दोनों की स्क्रीनिंग हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं. द फोर्थ इंपॉर्टेंट टेस्ट टू बी डन इज टू रूल आउट वायरल इन्फेक्शंस लाइक HIV, hepatitis B, hepatitis C और syphilis. Now these infections are sexually transmitted as well as you can get them through IV injection or through blood transfusion. Now, even if you come out positive for any of these infections, there is nothing to worry because they can be treated. But it is very important कि आपको शादी से पहले पता हो कि कहीं आप में कोई ऐसी ये वाली इन्फेक्शन तो नहीं है, because then you can transmit it to the partner. So what you need to do is that you get yourself treated for this and you use a barrier contraceptive or a condom after marriage so that you do not give it to your partner. Fifth most important testing is genetic testing. Do you know that 1 in 100 babies are born with genetic disorders? And traditionally हम लोग सोचते थे कि only families who have a history of genetic disorders, बस उन्हीं को अपनी ये स्क्रीनिंग करानी चाहिए. But now we know that 80% of babies who are born with genetic disorders actually have no known family history. So there are various tests जो कि ये जेनेटिक डिजीजेस पिकअप करते हैं, एंड द डिजीजेस विच वी आर मोस्टली कंसर्न्ड अबाउट आर थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, X-linked mental retardation as well as spinal muscular atrophy. तो जो there are many genetic tests which can pick up these faulty genes, and you have tests which can pick up faults in 500 genes or mutations in 1000 or even 2000 genes. So these 5 tests, blood group and RH factor, screening for thalassemia, screening for sickle disease, screening for virus
diseases like HIV, hepatitis C, hepatitis B, and syphilis, and genetic testing. These are the 5 tests which all couples should get done before they get married. So do these tests before you say I do, because healthy partners make a happy marriage.